So students, in the last class, we have discussed the credit creation process. I've told you with the help of an example, and we also took few assumptions through which we were able to understand the whole credit creation process by the commercial banks. I've told you that commercial banks do not have any power to supply money, but they can create credit in the economy with the help of the primary deposits that they receive and by advancing loans from those primary deposits. So as a whole, in totality, all the commercial banks can create more credit than whatever they receive as primary deposit. This was the crux of credit creation process. They can uh, provide more loans than the primary deposits they have. Okay, and we have discussed it yesterday. We also discussed it with the help of the credit multiplier formula, that with the given legal reserve ratio and with the given primary deposits, how much credit will be multiplied. The credit will be multiplied by how much amount, the primary deposits will be multiplied by how much amount. Today we have to see what are the limits, what are the things that will affect that credit creation. Here we are saying limitations to the credit creation. It means that what are the things which influence, which affect, okay, which determines the volume of credit creation in the economy. In many of the economy, the credit creation is more, and many of the economies, credit creation is less. What are the various reasons? What are the various causes? You can also call it as determinant, determinants, factors influencing, factors influencing the credit creation in the economy. But it is known as the limitations. That means what are the things that limits the creation of the credit. जो एक credit creation के credit के creation में बाधाएं बनती हैं, वो limits क्या है? Okay, first of all, I will write all the points that we will discuss one by one, and these points are quite technical, so you should think and then uh, understand. So these are the various limits, 6 limits uh, that are called the limits to the credit creation, or the factors that influence or determine the volume of credit creation in the particular economy. The first thing is total amount of cash reserves. If I'm talking about total amount of cash reserves, here I'm talking about the primary deposits that the commercial banks are receiving. Okay, the level of the amount of primary deposits that the commercial banks are receiving, it also affects the credit creation. Let's come to the formula 1 upon the ratio and the change in deposits. In our example, the deposit was 1000, okay, and your legal reserve ratio was 20%. So it was coming to 5,000. Okay, it was coming to 5,000. Now, for instance, if here it would be 2,000. अगर हमारा प्राइमरी डिपॉजिट 2,000 होता, तो हमारा कितना क्रेडिट मल्टीप्लायर का आंसर क्या आता? What would be the answer of credit multiplier? It would be 1/5 into 2,000. That means 10,000. Okay, that means 10,000. पहले में हमारा 5,000 क्रिएट हो रहा था, बट हमारा प्राइमरी डिपॉजिट बढ़ा तो 10,000 creation of credit हो रहा है. By the multiplying effect, we can see that the credit is being multiplied by 10 times. So जितना ज्यादा हमारा प्राइमरी डिपॉजिट होगा इकोनॉमी में, उतना ज्यादा क्रेडिट मल्टीप्लाई होगा, और जितना कम प्राइमरी डिपॉजिट होगा, उतना क्रेडिट हमारा कम मल्टीप्लाई होगा. So the banks must have enough primary deposits so that they can create more and more credit. Then ratio of cash reserve ratio, that means what was the ratio? We were taking 20%. Okay, in our example yesterday that we took 20%, and the deposit was 1,000.
यहाँ पे डिपॉजिट सेम रखते हैं बट सिर्फ परसेंटेज चेंज करके देखें कि अगर यहाँ पे 10% होता, लीगल रिजर्व रेशियो 10% होता, सो व्हाट विल बी द इफेक्ट? 1/10 into 1000. Okay, so when you will multiply 1000 by 10, we'll get 10,000. See, यहाँ पे हमारा अगेन हमारा जो क्रेडिट मल्टीप्लायर है, इट इज गिविंग मोर आंसर. ओके, ज्यादा आ रहा है यहाँ पे. तो जितना भी कम हमारा कैश रिजर्व रेशियो होता जाएगा, जितना भी कम हमारा लीगल रिजर्व रेशियो होता जाएगा, उतना ज्यादा हमारा क्रेडिट मल्टीप्लाई करेगा. व्हाई? बिकॉज विल बी हैविंग मोर एंड मोर मनी टू गिव लोन्स. अगर कैश रिजर्व हम ज्यादा से ज्यादा रखेंगे, सो दैट मींस के विल बी हैविंग लेस मनी टू एडवांस लोन्स. बट जितना कम से कम कैश रिजर्व रेशियो रखेंगे, उतना ज्यादा मनी विल बी हैविंग टू एडवांस लोन्स. सो जितना ज्यादा कैश रिजर्व रेशियो बढ़ता जाएगा, उतना क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, और जितना कैश रिजर्व रेशियो कम होगा, उतना ज्यादा हमारा क्रिएशन ऑफ क्रेडिट होगा. ऑलराइट, देन बैंकिंग हैबिट्स ऑफ द पीपल. If the people use banks, checks, drafts, pay orders, if they're using more use of banking instruments for making payments, so जो commercial banks होते हैं उनको कम cash reserve रखना पड़ता है. They are required to keep less cash reserves. Why? Because जब bank to bank transactions होते हैं तो उनको कस्टमर को पैसे विड्रॉ करके नहीं देने पड़ते हैं. बैंक की सप्लाई में से पैसे नहीं चले जाते हैं, बैंक में एक बैंक से दूसरे बैंक से ट्रांसफर हो जाते हैं. बट अगर वो विड्रॉ करते हैं तो बैंकिंग जितना भी डिपॉजिट है बैंकिंग, उसमें से पैसा कस्टमर के हाथ में चला जाता है. सो इट डज नॉट रिमेन इन दैट सप्लाई ऑफ द बैंक. तो अगर बैंकिंग हैबिट्स है लोगों की, लोग बैंक्स के थ्रू ज्यादा पेमेंट्स करते हैं, नॉट कैश में नहीं करते हैं, सो द बैंक्स विल बी एबल टू क्रिएट मोर क्रेडिट बिकॉज दे विल बी हैविंग more and more primary deposits. Developed countries में like USA is there, people use more banking things for making payments, for receiving payments. ज्यादातर digitalized है और banking instruments का use होता है, checks, drafts का. तो इसीलिए वहां पे क्रेडिट क्रिएशन बहुत होता है. इंडियन इकोनॉमी में क्रेडिट क्रिएशन इतना नहीं होता बिकॉज यहाँ पे लोग कैश पेमेंट्स बहुत ज्यादा करते हैं. That is why government is focusing on increasing the payments to the bank. Government is providing various concessions. They provide various schemes so that people are they become more habitual of the banking system. They do not make much payments in cash. Rather, they take help of the banking instruments like checks, drafts, internet banking, etc. The nature of security is offered. Banks provide the loans on the basis of the security that we offer. क्योंकि बैंक को भी अपना नुकसान नहीं करना होता. बैंक हमें ऐसे फ्री में इंटरेस्ट नहीं देता है जब तक हम उसके पास कोई कोलैटरल सिक्योरिटी नहीं रखवाते. सिक्योरिटी कुछ भी हो सकती है हमारी. अब किसी की एफडी है, किसी की लाइफ इंश्योरेंस, किसी की पॉलिसी है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, लैंड है, ज्वेलरी है, कुछ भी हो सकता है. व्हाट एनीथिंग इट कैन बी. ओके, तो अगर अच्छी सिक्योरिटीज ऑफर कर रहे हैं हम एज अ बोरोवर, सो बैंक विल बी मोर इंटरेस्टेड इन गिविंग अस द लोन. क्योंकि बैंक ये भी सोचता है कि अगर इन फ्यूचर हम लोन नहीं रिटर्न कर पाए तो वो अपना भुगतान कैसे करेगा. they will sell off the asset, जो सिक्योरिटी हमने रखी उसको सेल ऑफ कर देगा और उसको उसका पैसा मिल जाएगा अगर हम फ्यूचर में लोन रीपे नहीं कर पाए किसी वजह से. बट अगर सिक्योरिटी सही नहीं है, बैंक ये देख रहा है कि हाँ मुझे लोन बाद में अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे लोन नहीं मिल पाएगा, तो बैंक विल नॉट टेक दिस स्टेप एंड दे विल नॉट गिव द लोन्स बिकॉज बैंक को भी अपना एक बैलेंस शीट मेंटेन करनी है, उसको अपने क्रेडिटर्स इंक्रीज नहीं करने. ऑलराइट, देन बिजनेस कंडीशंस में अगर बिजनेस कंडीशंस अच्छी चल रही है, देयर इज प्रॉस्पेरिटी, देयर इज बूम, सो the business person, the investors are more interested in taking loans and investing.
और जब बिजनेस कंडीशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है, पेसिमिस्टिक हो जाती है, रिसेशन है, डिप्रेशन है, तो बिजनेस पर्सन लोन नहीं लेते हैं, ट्रेडर्स लोन नहीं लेते हैं, दे आर नॉट रेडी टू इन्वेस्ट। तो इस केस में लोन क्रेडिट क्रिएशन कम होगा। देन मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक, central bank of every country uh, follows a monetary policy. They create a policy. Monetary policy means a policy created to maintain the supply of the money, to check the supply of the money. Okay, that what is the usage of the money that is happening in the economy, how much credit is being given, supplied into the market. Okay, all these things comes under the monetary policy. This we will do in detail after doing the functions of the central bank. We have to do the quantitative and qualitative measures, how they control credit. Okay, so this you will be able to understand at that time when we will study that. So यहाँ पे इतना समझ लो that central bank has the power to reduce the primary deposits with the commercial banks and to increase the primary deposits with the commercial banks, because each commercial bank has to keep a minimum ratio of its primary deposits, of its total deposits with the central bank also. ओके अगर सेंट्रल बैंक है कि आपको अपने डिपॉजिट का ज्यादा पार्ट मेरे पास रखवाना पड़ेगा, तो कमर्शियल बैंक के पास ज्यादा पैसा नहीं होगा लोन्स देने के लिए लोगों को। बट वहीं पे अगर सेंट्रल बैंक है कि नहीं, आप अपने टोटल डिपॉजिट का कुछ कम पार्ट हमारे पास रखवा सकते हैं, देन कमर्शियल बैंक्स विल बी इन मोर, they'll be having more money to advance loans. So in that case, credit creation will be more. So these were the limitations. At least you should learn 4 limitations with explanation. Okay, with the implications of the explanation that I have told you, as I have told you.